Hi dear students, in this class we are discussing about inverse trigonometric function. In last class we were discussed about the part 2 and fast 1 and whatever the inverse trigonometry in part 3. So some formulas are there, we have solved it, and some properties are there, we solved it, and now we have to find the x value, for which value of x this equation will be satisfied. So we need to find that all values. So like that, so find the value of x when they are given the one equation, this equal to this, then find the value of x, and this equal to this, then find the value of x, this equal to this, then find the value of x, this equal to this, and this is the 1 marks question. Clear? If this equal to this, if it is true, then for which value of x will be defined, you need to write the domain for sine inverse x. That's it. Clear? And here also given identity is true for the for which value. So for which value means you have to write the answer. Clear? So here also some two equations are there. Then this very simple 2 marks 3 marks question aega. You need to know how to find the value of sin. So now the given equation sine inverse of 1 by 5 plus cos inverse of x is equal to 1. So now I will take this sine to this side. It becomes what? Sine inverse of 1. So ऐसा हम बोले तो वो गलत है. तो but you have to apply the sine inverse on both side. Then sine inverse of sin theta is equal to sine inverse of 1. दोनों सेम ही आएगा. Sine inverse of sin theta will be theta. So like that only ये sine इधर आएगा. ऐसा आप think करो. Then it will be remaining sine inverse of 1 by 5 cos inverse of x is equal to sin inverse of 1. ये sin इधर आए तो sin inverse. Now sin inverse x इसका आंसर कितना आएगा? 5 by 2. So sin inverse of 1 by 5 cos inverse of x is equal to 5 by 2. So already we have what? We have the sin inverse x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5 by 2. सो इधर दोनों वैल्यू x है तो आंसर क्या आएगा 5 by 2. बट x शुड बी बिलोंग्स टू -1 to 1. तो ये बिलोंग्स टू करते क्या नहीं वो चेक करना पड़ेगा बस. सो अभी साइन इनवर्स डब्बा cos इनवर्स डब्बा आंसर क्या आएगा 5 by 2. सो 5 by 2 आता है तो 5 by 2 कैसे आएगा? तो ex वैल्यू भी दोनों सेम आना चाहिए. देन ओनली दीज टू आर करेक्ट. सो ऑन कंपेयरिंग दीज टू, तो x value will be 1 by 5. This is the one method. Another method, after this you have to solve like this. कैसे? आप ये sin inverse 1 by 5 ना उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? cos inverse x is equal to 5 by 2 minus sin inverse x. Sorry, sin inverse of 1 by 5. And you know already 5 by 2 minus whatever the value is there, that is nothing but sin inverse x cos inverse x is equal to 5 by 2. आप ये sin inverse x उधर भेजे तो क्या हो जाएगा 5 by 2 minus sin inverse x. 5 by 2 minus sin inverse x का वैल्यू क्या आएगा cos inverse x. इधर क्या रहता है वही वैल्यू इधर. तो सेम cos inverse x is equal to 5 by 2 minus sin inverse x will be cos inverse x. So cos inverse x equal to cos inverse of 1 by 5. By using the property x is equal to क्या आएगा 1 by 5. दोनों मेथड सेम ही है. क्लियर है? सो कौन सा भी आप एक करो, कंपेयरिंग करो और वैल्यू लिखो, दोनों सेम ही है. सो इट इज क्लियर. सो नाउ दैट सॉल्व 2 tan इनवर्स ऑफ cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. क्वेश्चन तो बड़ा है तो you need to know about the formula. What is that formula? We have the what is that 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ये फार्मूला आपको आना चाहिए. तो ये फार्मूला इधर x क्या हो जाएगा x value will be cos x. Then it will be considered as this equation will be this equation becomes tan inverse of 2 cos x divided by 1 minus cos square x is equal to tan inverse of 2 cosec x. क्लियर है? बहुत साइड tan इनवर्स आया अभी, तो बहुत साइड tan इनवर्स आया तो आपको पता है ना ये प्रॉपर्टी उधर गए तो tan ऑफ tan इनवर्स विल बी x आएगा. और यू कैन अप्लाई बहुत साइड tan दैट विल गिव्स द गिवन वैल्यू, और बहुत विल बी कैंसिल नहीं बोल सकते हम, बट tan अप्लाई करना पड़ेगा ऐसा. सो ये इधर गए तो दोनों सेम है ना. ये tan इनवर्स x आना ही चाहिए तो अंदर का वैल्यू भी सेम आता है. तो 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cosec x बाय यूजिंग प्रॉपर्टी. क्लियर? सो नाउ this 2 cancel and cos x divided by
What is 1 minus cos square x? That is sin square x. By using sin square x plus cos square x is equal to 1. तो इधर क्या आएगा? sin square equal to 1 by cos square x. क्लियर? is equal to 1 by sin x. ये sin x एक sin x cancel. cos x by sin x is nothing but cot x is equal to 1. x is equal to cot inverse of 1. ये cot उधर गए तो cot inverse of 1. So cot inverse of 1 possible किधर आएगा? 5 by 4. So for all values of x equal to 5 by 4. You can say also the multiples of x. Whatever the x is there na, n5 plus or minus 5 by 4. This is the property of हमारा cot का. Clear? This is the solution of x. Clear? So easy question है. ये भी ये देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x. सर ये डिवाइड बाई 2 ले लो, tan इनवर्स अभी अप्लाई होता है ना प्रॉपर्टी, ऐसा किया तो चलते क्या? नहीं चलेगा. सो ये tan a2 है ना, इधर ले लो बेटा. तो 2 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स is equal to tan inverse x. x is greater than 0. Now 2 tan inverse of 1 minus x, again same formula, 2 tan inverse of this value, here 2 tan inverse of this value. What is the value for tan inverse x? 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. सर उधर भी x है उधर भी x है, तो क्या करो आप डब्बा ले लो. क्या हो जाएगा? 2 tan inverse of डब्बा is equal to tan inverse of 2 dabba divided by 1 minus dabba square. Clear up? So now you have to use that formula here. dabba value क्या है इधर? उधर इधर कंपेयर कर दो. dabba value क्या है? dabba value 1 minus x divided by 1 plus x. तो वही formula इधर यूज किया तो tan inverse of 2 dabba. What is the dabba value? 1 minus x divided by 1 plus x whole divided by 1 minus 1 minus dabba square. What is the dabba value again here? So dabba value is 1 minus x divided by 1 plus x whole square. Here this is our dabba value. So now we have to solve it. So this equal to tan inverse x. अभी tan inverse तो cancel हो जाएगा. This equal to this x. Clear? So now we can see the consider here. तो क्या क्या बचेगा? 2 times 1 minus x divided by 1 plus x. इधर क्या आएगा देखो? 1 plus x whole square, 1 minus x whole square, 1 plus x whole square. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 plus x whole square into 1 is 1 plus x square minus 1 minus x whole square is 1 minus x square. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 plus x whole square is equal to क्या आएगा? x. You need to solve further it. Clear up? So कैसे solve करते हैं आप देखो. अभी इधर 2 into 1 minus x in the numerator and denominator of the denominator चेंज होते हैं ना, वो भी चेंज करेंगे हम. 1 plus x into ये ऊपर जाएगा 1 plus x into square divided by ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 minus x whole square as well as 1 plus x whole square. क्लियर है? 1 plus x whole square minus 1 minus x whole square, ये माइनस आएगा. क्लियर है? इज इक्वल टू क्या आएगा? x. ये वैल्यू इधर लिखा मैं उल्टा. सो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर ऐसा यूज करना पड़ेगा. p by q होल डिवाइडेड बाय a by b. क्या हो जाएगा? p by q into b by a हो जाएगा. यूज दिस प्रॉपर्टी हियर. सो अभी इधर क्या हो जाएगा? एक वाला कैंसिल हो जाएगा एंड 2 times 1 minus x into 1 plus x होल डिवाइडेड बाय इधर क्या बचेगा? 1 plus x होल स्क्वायर माइनस 1 minus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x. सॉल्व इट. तो कैसे सॉल्व करते हैं आप? इधर देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा. तो कैसे आता है? तो 2 into 1 minus x 1 plus x will be 1 minus x square. तो 2 into 1 minus x square whole divided by इधर है मजा 1 plus x whole square. What is the 1 plus x whole square? 1 square x square plus 2x minus इधर भी सेम है ना 1 square x square minus 2x is equal to क्या आएगा? x. What is the next step of this one? तो 2 into 1 minus x square divided by इधर क्या आएगा देखो just here. so 1 minus 1 cancel, x square minus x square cancel, minus minus plus दुश्मन का दुश्मन दोस्त. 2x plus 2x क्या आएगा? 4x is equal to x. 2 1 जा 2 2 जा ये 2x इधर आएगा तो 1 minus x square is equal to 2x square. क्लियर? सो minus x square इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x square plus x square 3x square is equal to 1. तो इधर देखो आप 3x square is equal to 1
क्या आएगा सॉल्यूशन आपका 3x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3. दिस इज योर solution. Clear? So simple method you need to use here, that's only. So that's the only main trick. X is equal to plus or minus 1/√3. One more method is there, that is nothing but tan inverse है 1/2 है tan inverse, इधर tan inverse of x वो इधर आए तो माइनस tan inverse x, कभी tan inverse x माइनस tan inverse y फार्मूला लगा के इक्वल टू 0 करना पड़ेगा बस, देन ओनली विल गेट x इक्वल टू 1/√3 as well as minus 1/√3. I hope it is clear. So next, and sin inverse of 1 minus x and minus 2 sin inverse x equal to pi/2. आप सिर्फ क्या करो, ये sin inverse x इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, तो इधर वो उधर भेजे तो नेक्स्ट यू विल गेट दिस वन minus 2 sin inverse x is equal to pi/2. ये इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस sin inverse of 1 minus x. You need to remember the formula. So sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2. तो cos inverse x is equal to 5/2 minus sin inverse x. ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला यूज किया तो 5/2 माइनस sin inverse x. आंसर क्या आएगा माइनस sin inverse x is equal to cos inverse of 1 minus x by using this property. Yes or no? By using this property लिखना पड़ेगा इधर. So we have to write the property will be this one. अभी ये cos inverse x है ना, इधर ले लो, क्या हो जाएगा, तो cos of minus 2 sin inverse x is equal to 1 minus x. Clear? So अभी आप बाबा cos of minus theta फार्मूला पता है आपको, so cos of minus theta will be cos theta. Yes or no? So whatever it is a even function. Now cos of minus theta will be cos of 2 sin inverse x is equal to 1 minus x. अभी देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, cos of 2 sin inverse x is equal to 1 minus x. तो जरा सा आप सोचो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, cos 2 थीटा गोल्डन फॉर्मूला cos 2 थीटा 1 minus 2 sin square थीटा, वो फार्मूला इधर यूज करो ना, तो 1 minus 2 sin square थीटा वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 minus x. अभी आप देखो ये वाला 1 कैंसिल, सो माइनस 2 टाइम्स है ना, माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स. अभी आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, 2x² इक्वल टू एक्स आएगा, तो x कैंसिल होते क्या सर, ऐसा नहीं कैंसिल कर सकते आप, क्यों, बिकॉज इफ इट इज 0 x 0 है तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो 2x² माइनस x इक्वल टू 0. नाउ 2x you can take x common, then remaining will be x minus 1 minute, you can remember here. So इधर x आप कॉमन ले सकते, तो x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2x minus 1 equal to 0. Either x equal to 0 is a one solution and another solution कौन सा, 2x minus 1 equal to 0, तो x equal to 1/2. There are two solutions. The one solution is x equal to 0 as well as x equal to 1/2. For which of the following will be followed, x equal to 0 or x equal to 1/2. So अब a 1/2 इधर सब्स्टिट्यूट करो बाबा, साइन इनवर्स ऑफ 1 minus 1/2 क्या हो जाएगा, 1 minus 1/2 will be 1/2 minus 2 times sin inverse of 1/2. sin inverse of 1/2 30 डिग्री को आते हैं ना, then it is 2 times 30 डिग्री, बोले तो 2 times 30 डिग्री 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा, इधर 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री किया तो क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 1/2 इज अ नॉट अ सॉल्यूशन, एट x इज इक्वल टू 1/2 not satisfied. Clear the equation, therefore x equal to 0 is a solution. Clear, this is our solution. And next question, 2 tan inverse x equal to, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, write the values of x for which of the following will be holds. So ये इक्वेशन होल्ड आने के लिए क्या आना चाहिए आपका आंसर, the given identity is true for x belongs to -1 to 1 only. This is the answer directly, 1 मार्क के लिए आता है वो क्वेश्चन, बस 1 मार्क. क्लियर, सो नाउ tan 2 tan इक्वल टू ये आने के लिए क्या x का वैल्यू होना चाहिए 0 to infinity,
So these are the two main question and some question also there you can try at home. So I hope the part 3 is clear, and everything is part 1, part 2, part 3 is clear, and part 4 will be a simplest form, and through that 3 marks, 2 marks, very important question. Already 2 marks is a part 2, that is very important. Part 1 is properties, and this will be the part 3. And I hope I will solve that graphical method to understand what is inverse trigonometric function and what are the graphs of inverse trigonometric functions are there. We'll discuss that separate class on graphical method of inverse trigonometric function. Clear? Thank you.